हेडिंग डालिए टेम्पलेट क्लास। A type of class which define with member of the object of template class and define various types of member function inside a class to describe the defined class as general class. The member function of template class able to handle common types of data in C++ program. These are the following main advantage of template class. पहला first one, a template class allow data member as object of template class. Second, the public member function of template class able to describe the properties of a template data member of same class. Third, the template class define their objects with proper data type casting. अब देखिए कैसा स्ट्रक्चर होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ template class. We need template, then class, define the object, T should be small, it is a keyword, and type name must be defined as class, and the object name, it's commonly we are taking here capital T. You can change it as per your requirement, but commonly we are taking capital T. Now we will define a simple class, specify the class name, then terminate this class. Inside this class we will take private and the object TA like this, data member of class as an object of template. After that we need a public and return type function 1 describe the property of template data
member. Like this we can define so many functions in same class as per our requirement and specification according to the given statements or a stated problem. And after this we can call inside main function. And what will be the way to define object? This is very important. The structure return here 0, and then the name of class we needs to specify. What I am taking in a structure, the name of class is class name. So at the time of declaring the objects, here we will take class name, and you must have to remember I was specifying after declare the class name then object name, but in case of template class we need to specify the object of this class, which type of data it will be taken, if it will be taken integer, float. So we must have to specify here that data type, which type of data we will use through the object of this class. And with this object of class we need to specify only the value which we will assign here. If you will assign here int, then this object will able to take integer and display integer, or take integer types of data for operation. Like this, if you will take here float, if you will take here double, if you will take here character, then your object is able to specify only those types of data through the template class. This is the differences between a simple object declaration and the object declared that are defined as a template class members. So this, I hope this will be clear to you, and you will write this structure very clearly. Write down. Down, sir. Okay. Down, sir. Okay. Now write an example. Write a program to take a number. सर ऊपर में सर दोनों में फंक्शन वन ही लिखते हैं सर। क्या दोनों में फंक्शन वन ही होगा सर? अब चेंज कर सकते हैं, मैं सैंपल दे रहा था कि इस तरह के फंक्शंस होंगे. It will be more than one functions, data members, like a simple class we can declare and use them. Okay, but the name should be changed according to our requirement. जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा फंक्शन का नाम डिक्लेयर करके और हम लोग उसका यूज कर लेंगे. ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं. हम लोग कल का ही क्वेश्चन था हमारे पास. राइट ए प्रोग्राम टू टेक अ डेटा मे बी ऑफ एनी टाइप and display them using template class and its template class and its objects. कैसे इसके ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं. तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं वहाँ पेस्ट कर दूंगा. जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग कॉपी करते हैं. ये क्वेश्चन हो गया हमारा. चलते हैं हम बैक टू अपने कंपाइलर के पास.
अपने कंपाइलर में आ गए, यहाँ से ओपन टेम्पलेट क्लास right here. This question is question, and now slash this one and this one, right? Now we are taking here header files IO stream. It is important in all C++ program. After that we are taking here using namespace std, then template type class and the object name t. Now declaring a class, my class. In private we are taking a variable of template class object t as a t a. Inside public we are defining a method, a member function whose name is input with return type void, and now giving here a message enter value. अब यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि किस तरह का वैल्यू हमें यहाँ पर इनपुट करना है, बिकॉज ये जो डेटा इनपुट करेंगे हम लोग, ये रन टाइम में जब फंक्शन कॉल करेंगे तो अब ऑब्जेक्ट को किस टाइप से हमने चेंज किया है ये हमें पता नहीं होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट यह मैसेज पुट किया है कि एंटर वैल्यू, और ये ए के वैल्यू को सीन करा रहे हैं और फिर शो नाम के मेंबर फंक्शन से योर वैल्यू और ए को प्रिंट करा रहे हैं, राइट। तो ये जो क्लास माई क्लास है एक टेम्पलेट डेटा मेंबर से कंस्ट्रक्टेड है और इसमें दो मेंबर फंक्शंस हैं, वन इज फॉर टेक इनपुट एंड अनदर इज फॉर आउटपुट। नाउ वी नीड्स टू कॉल दिस वन int main. Now look here, my class, this is the name of class. Specify here this name of the class, and now we needs to take integer types of data through the object x. This object x is especially used to take in types of data, so we needs to specify here which type of the object x will takes your data. Now x dot input and x dot show. अगर सिर्फ इसी को हमें कॉल करना हो तो नो प्रॉब्लम, ये सिर्फ इंटीजर के लिए काम करेगा। यहाँ टेम्पलेट क्लास का एडवांटेज मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द एडवांटेज। यहाँ ऑब्जेक्ट टी ए है बट यहाँ जो ऑब्जेक्ट एक्स है एबल टू टेक ओनली इंटीजर टाइप्स ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट वन, वी नीड्स अ फ्लोट टाइप्स ऑफ डेटा, सो आई एम डिक्लेयरिंग हियर माई क्लास फ्लोट x1, राइट। अब देखिए x1 जो वैल्यू यहाँ आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट x1 है ये फ्लोट टाइप्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जब भी हम लोग यहाँ से इनपुट को कॉल करेंगे तो वी मस्ट हैव टू स्पेसिफाई द डेटा ऑफ फ्लोट टाइप्स एंड दिस ऑब्जेक्ट विल एबल टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ फ्लोट टाइप्स। Similarly we can also specify this one like this and change here type string. Third one is a string and x1 input, x2 I am changing here the object name because x1 is already existing there, x2 x2. Now look what is happening. First was for the integer, so I am giving here integer, it's giving output your value 1 2 3. Second was for the decimal point value, I am giving decimal point value and it's display out like this. Third time for a string I am giving here collection of characters which is known as a string and it's giving the output JAI, right। तो अब यहाँ पर द एडवांटेज क्या हुआ कि हमने जो स्पेसिफाई किया क्लास में वो तो मेथड मेरा एक ही है, इनपुट एक ही है, सो बट वी आर यूजिंग दिस मेथड्स विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स। दिस जनरलाइजेशन इज प्रोवाइडेड बाय द टेम्पलेट क्लास। दिस इज द मोर वन एडवांटेज ऑफ दिस टेम्पलेट क्लास। अगर आप इसी में
ये हो गया, लिख लिए इसको। एक काम कीजिए, क्या स्क्रीनशॉट लेंगे या राइट करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेते सर। ले लीजिए। डाउन सर। डन सर। ओके, आई एम कॉपिंग सर दिस इसमें वन। बोलो। सर हम्म सर इसमें जो डाटा टाइप इंट और फ्लोट लिखे हैं सर, हम्म जब कोई डाटा लिखते हैं तो सर वो बोल्ड हो जाता है, तो स्ट्रिंग बोल्ड क्यों नहीं हुआ सर? स्ट्रिंग इसका एक्चुअली अपना ओन लाइब्रेरी नहीं है, ये जीसीसी से एक्सपोर्टेड है, इसीलिए इसने यहाँ पर बोल्ड नहीं किया। ठीक है, इसका अपना सी प्लस प्लस का ये स्ट्रिंग डेटा टाइप स्पेसिफाइड नहीं है, ये इम्पोर्टेड है, और इसी वजह से ये दूसरे के लाइब्रेरी से यूज़ किया हुआ है, इसलिए ये बोल्ड नहीं हुआ। और इंट और फ्लोट सी प्लस प्लस का अपना ओन लाइब्रेरी से यूज होता है, इसीलिए वो इसको डिस्प्ले कर रहा है।